we are discussing the structural and functional unit of the nervous tissue, that is a neuron. न्यूरॉन में दो पार्ट्स होंगे. वन पार्ट इज दी साइटॉन और सेल बॉडी और सोमा और पेरिकैरियन, विच ऑल मीन्स द सेम. दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन. और इस साइटॉन या सेल बॉडी में देर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस. So it is the controlling center. Nucleus is present. There is cytoplasm, and in the cytoplasm there will be presence of numerous mitochondria, neurofibrils, black color के fibrils जो यहाँ पे represent किए, and there is presence of a very important bodies which are granular structures. These granular structures are known as Nissls granules, also known as tigroid body. ये Nissls granules या tigroid body जो है ये rich in RER है, तो यहाँ पे granules का representation किया है. Important to note is Nissls granules are present in the cytoplasm of the cyton. Also, they are present in the dendron, but this Nissls granules are not present in the axon part. After the cyton part, we are discussing now the cell processes or the neurites. Cell processes दो type के. One is the dendron, which are the shorter cell processes, and the other is the axon, which is single and longer short process, longer cell process. So there is dendron and there is axon. डेंड्रॉन के जो ब्रांचेस हैं उनको हम लोग बोल लेते हैं एज दी डेंड्राइट्स. सो द ब्रांचेस ऑफ द डेंड्रॉन आर नोन एज डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स हेल्प करते हैं इन द इम्पल्स कंडक्शन टुवर्ड्स द साइटॉन. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट रोल कि ये डेंड्राइट्स इम्पल्स कंडक्शन टुवर्ड्स द साइटॉन लेके आएंगे. सो दैट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस. इनफैक्ट और एक यहाँ पे पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि टिप्स ऑफ डेंड्राइट्स जो है, the tips of dendrites, these tips of dendrites are known as receptors. So majority of our sense organs have these tips of dendrites. They are receptors. For example, our eyes, they contain the tips of dendrites, which is the photoreceptors. Ear will contain auditory receptors. Tongue will contain gustatory receptors. Nose will contain olfactory receptors. Skin contains thermoreceptors. So all those receptors are nothing but tips of dendrites जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा एंड इम्पल्स कंडक्शन होगा. इम्पल्स विल बी कंडक्टेड टू द साइटॉन एंड साइटॉन विल देन कंडक्ट द इम्पल्सेस थ्रू द एक्सॉन. तो एक्सॉन का काम होता है टू कंडक्ट द इम्पल्स अवे फ्रॉम द न्यूरॉन, अवे फ्रॉम द साइटॉन ऑफ द न्यूरॉन, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल इम्पल्स कंडक्शन. सेंट्रीफ्यूगल. एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म होगा, दैट साइटोप्लाज्म इज नोन एज एक्सोप्लाज्म, जिसमें वापस से रिपीट कर दे, Nissls granules will be absent. Only neurofibrils and mitochondria are present. The cell membrane of the axon is known as exolemma, जो यहाँ पे रेड कलर में रिप्रेजेंट किया exolemma, and that exolemma is a selectively permeable membrane. और ये selectively permeable membrane कुछ ions के exchange में help करता है, जिसको हम लोगों ने discuss किया nerve impulse conduction. Then this axon is surrounded by an important cell, that is the Schwann cell. और उस श्वान सेल के मेम्ब्रेन को हम लोग बोल लेते हैं एज द न्यूरीलेमा. तो ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है, दैट इज द श्वान सेल, और उसके अंदर ये ब्लैक कलर का जो पोर्शन है, दैट ब्लैक डॉट इज नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ द श्वान सेल, जो यहाँ पे भी न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किया है. ये श्वान सेल जो एक कवरिंग बना रहा है अराउंड द एक्सॉन, दैट इज कंटिन्यूअस, एंड दैट श्वान सेल सिक्रीट्स अ लिपिड डेरिवेटिव, a lipid and combination of protein, but mainly it is a lipid. और वो लिपिड डेरिवेटिव का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज दी माइलिन शीथ, जो अंदर हम लोग ने ग्रीन कलर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. और ये माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन होता है, दिस इज इन दी कंसेंट्रिक रिंग्स. इन कंसेंट्रिक रिंग्स, पूरा कंसेंट्रिक रिंग्स में माइलिन शीथ बनाया जाएगा, और ये माइलिन शीथ के फॉर्मेशन को वी कॉल इट एज माइलिनोजेनेसिस. दैट इज नोन एज माइलिनोजेनेसिस. सो दैट इज अ कंपोनेंट मेड अप ऑफ लिपिड्स, एंड वो स्पेसिफिक लिपिड्स को हम लोग बोल लेते हैं एज दी स्फिंगोलिपिड्स. यहाँ पे आगे मैं वो लिपिड्स का नाम भी लिख देता हूँ, दैट इज नोन एज स्फिंगोलिपिड्स या स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं. सो न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली ये लिपिड्स का भी जरूरत होगा. नाउ व्हेन वी ऑब्जर्व दिस माइलिन शीथ, द माइलिन शीथ ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स, दे आर नॉट कंटिन्यूअस, बीच बीच में गैप्स आ रहे हैं.
बीच बीच में गैप्स आ रहे, एंड दोज गैप्स आर नोन एज द नोड ऑफ रैनवियर. These gaps are known as node of Ranvier. तो ये एक नोड का प्रेजेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जहां पे भी वो नोड ऑफ Ranvier रिप्रेजेंट किया है वो एग्जिबिट करता है कि ये न्यूरॉन्स में इम्पल्स कंडक्शन काफी फास्ट होगा. फ्रॉम वन नोड टू दी अदर नोड इम्पल्स जैसे जंप करते हैं, दे कीप ऑन जंपिंग, एंड दिस जंपिंग टाइप ऑफ इम्पल्स कंडक्शन इज नोन एज सॉल्टेटरी इम्पल्स कंडक्शन. और जैसे ये सॉल्टेटरी इम्पल्स कंडक्ट हो जाएगा up to the terminal part of the neuron, the terminal part of the neuron is known as the telodendron, which has a swollen knob like structure which is known as synaptic bulb or synaptic button, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया इन इम्पल्स कंडक्शन थ्रू साइनेप्स भी. तो साइनेप्टिक बटन या साइनेप्टिक बल्ब में देयर इज प्रेजेंस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स जो रिलीज होंगे for that impulse conduction to the next neuron. So this is the detailed discussion about the neuron.